legacies. तुमसे ना हो पाएगा। Sorry. एवरीवन, वेलकम टू RSB आइडियाज़। तो आज के ब्लॉग में हम जाने लगे हैं पेशावर। एक दिन का ट्रिप है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और चलते हैं वीडियो की तरफ। Distance from Islamabad to Peshawar is 175 kilometers, which will take you around 2 hours. So guys, यही बेहतरीन रास्ता है इस्लामाबाद से पेशावर जाने का। आप M1 पे चढ़ जाएं, M1 मोटरवे पे, और आप चले जाएं पेशावर। पेशावर पहुंचते ही हमने खाना खाया, वहां से सीधा हम चले गए GRC क्रिकेट ग्राउंड पेशावर। गाइस, हम जब क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं या बॉलिंग पे, मेरे आगे मेरा भाई था, तो मैं बड़े अच्छे मूड से आया था। मैंने जैसे ही बॉल कराई, मेरे एक ओवर में मेरे भाई ने 4 छक्के मार दिए। मैं नहीं मानता। मैं तो अपने भाई को आउट ना कर सका, लेकिन हमने बस बुलाया अंकल शहजाद को। उन्होंने बॉलिंग कराई और बाबा ने कैच पकड़ा। जंपिंग कैसल हो, और अगर हम उसमें जंप ना करें तो ऐसे तो नहीं होता। रफे भाई ने और अयान भाई ने हमको ट्रेपोलिन पे बहुत मजा कराया। GRC के अंदर ही हमें एक बाबे खैबर की रेप्लिका मिली, जिसके पीछे एक दीवार थी जिसके ऊपर शहीदों के नाम थे। वो शहीद जिन्होंने ज़रबे अज़ब में हिस्सा लिया और जामे शहादत नोश फरमाई। Day 2. Welcome to Bala Hissar Fort. बालाहिसार फोर्ट इज़ ओनली ओपन ऑन वीकेंड्स फॉर विजिटर्स। अगर आपको उधर जाना है तो आपको एडवांस में एंट्री करवानी पड़ती है। Balahisar is a Persian word which means elevated or high fort. The name was given by the Afghan Pashtun king Timur Durrani. When the Sikhs occupied Peshawar Valley, they renamed it as Samir Garh in 1834, but the name did not become popular. Interestingly, no one is clear about the origin of Balahisar, and many believe that the fort was built by the Mughals. A renowned historian, Dr A.H Dani, in his book Peshawar, Historic City of Frontier, writes that when a Chinese traveler Hiuen Tsang visited Peshawar in 630, he spoke of a fortified or walled portion of the town in which the royal palace should stand. In view of the work of the historians like Dr A.H Dani, it is easy to relate origin of Balahisar with city of Peshawar itself, which is about 2000 to 2500 years old. The fort is 92 feet above ground level and is spread over an area of 15.4 acres. In 1849, when Peshawar Valley became part of British India, Balahisar had mud walls. The present structure was renovated by British during 1884 to 1889, which is evident from the baked bricks used for its construction. Headquarters Frontier Corps was formed in 1907 at Peshawar, and it was shifted to Balahisar in December 1948. Today, Balahisar Fort serves as the headquarters Frontier Corps, North खैबर पख्तून। गाइस, हम लोग गए हुए थे, एक फोर्ट है यहाँ पे उसके पास, और अभी हम अंदर चलते हैं। गैलरी है यहाँ पे। This gallery was quite inspiring because it contains the picture of kings who ruled Bala Hissar and people of Peshawar with their culture. This was the first uniform of Frontier Corps.
Evolution of FC uniforms over the decades. And this is the present uniform of FC. After Pakistan and India became independent in 1947, Pakistan expanded the Frontier Corps further by creating a number of units, including the Thal Scouts, the Northern Scouts, the Bajot Scouts, the Karakoram Scouts, the Kalat Scouts, the Dir Scouts, and the Kohistan Scouts. British officers continued to serve in Frontier Corps up to early 1950s. The corps was split into two major subdivisions, with FC Balochistan incorporating the Zob Militia, the Sibbi Scouts, the Kalat Scouts, the Makran Militia, the Kharan Rifles, the Persian Scouts, the Chagi Militia, and the 1st Masood Scout. The rooms of Bala Hissar fort are divided into 2 units per room, in which the memoirs of the unit are displayed. फोर्ट में ये वो प्रिजन है जिसमें खान अब्दुल गफ़ार खान उर्फ बादशाह खान को अंग्रेज़ों के ज़माने में कैद किया गया था। एफसी की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटीज़, आर्मी एफसीएनए को असिस्ट करना इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स एंड राउट्स, अंडरटेक काउंटर मिलिटेंसी, क्रिमिनल टेररिज्म ऑपरेशंस ऑन ऑर्डर्स, assist law enforcement agencies in maintenance of law and order in the province, safeguard important sites and assets. बाला हिसार फोर्ट की 2 चीज़ें सबसे इंटरेस्टिंग थी। पहली ये थी जिसमें ट्रेडिशनल आर्म्स से लेकर लेटेस्ट आर्म्स की कलेक्शन की गई थी, और दूसरा ये कमरा जिसमें एफसी ने अपने शोहदा की तस्वीरें बहुत अच्छी तरह से और ख़ूबसूरत तरीके से आवीज़ा की गई थी। ये जगह जहाँ से फांसी दी जाती थी, यहाँ पे रस्सी से बांध के सीधा नीचे। ये जालियाँ उन्होंने अभी लगाई हैं, वरना वैसे तो ये खुला हुआ था। क्या करते थे भाई? एक बार लटक रहता था तो दूसरी केली कोई ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी। यहाँ से आधे पेशावर का पैनोरामिक व्यू मिल रहा था।
और LMG गन का भी। बालाहिसार फोर्ट का हमारा विजिट तकरीबन 2 घंटों का रहा, जिसमें हमने पेशावर के बारे में और बालाहिसार फोर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पाई। We hope you like this video, so share this with your friends and relatives and tell us your feedback in comment section. Thank you for watching RSB Ideas. Please like and subscribe. Prayers for you all.